सो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल है क्या। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन दिस पॉलिनोमियल। व्हाट इज ए पॉलिनोमियल? सो आई विल स्टार्ट कि इफ x इज अ वेरिएबल, इफ x इज अ वेरिएबल, तो हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पॉज देना होगा क्योंकि हम वेरिएबल को पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? वेरी करने की एबिलिटी। वेरी माने चेंज, मीन्स विच हैज द एबिलिटी टू चेंज, which has the ability to change, like your age. Every year it is changing. If you are suppose in this year of the age of 13, next year it will be 14, next year it will be 15. So your age is variable. So if suppose I don't know you, मैं आपको नहीं जानता, और आपके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया कि अनुज इज अ बॉय, आफ्टर 5 years his age will be this much. तो आपकी प्रेजेंट एज कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि आपकी एज में चेंज होने की एबिलिटी है, तो आपकी एज एक वेरिएबल है। तो मैं उस वेरिएबल के अगेंस्ट क्या बोलूंगा? लेट एज ऑफ अ पर्सन इज x years. Why I chose this letter x? Reason being, I can take y, I can take z. So x, y, z itself are not variables. Because we are choosing these letters, we are taking these letters against the variable. That is why x, y, z are variable. So variables are things. Against those things which have the ability to change, we take letters x, y, z, t, so on. Okay, now you understood what is a variable. If x is a variable and n is a positive integer, integers, तो स्टूडेंट इंटीजर जानते हैं आप? होल नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अगर आप होल नंबर्स लिखते हैं, सो ऑन, एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, दिस गिव्स यू इंटीजर्स, नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं होंगे, अपॉन में नहीं होंगे। So because n is a positive integer, it means only we are taking this part, not this one. So n is a positive integer and x is a variable, n is a positive integer, and an minus 1, an minus 2, so on, a naught are real numbers, any real numbers. Again real numbers, students. So what are real numbers? Real numbers, real numbers, if we say, these are rationals and irrationals. rationals कैसे होते हैं फ्रैक्शन में? p by q form, q cannot be equal to 0, and irrational numbers are under the radical sign. This one is radical sign, nth root, any number you can take, 3, 4, 5, 6. But you know, if a number is a perfect square like square root 4, then it will be considered as rational, not irrational. So you have to see if it is a perfect square, if it is a perfect cube. So accordingly that whatever will be the root, if the factors are same, it is rational. And if whatever is the root, if the factors are different, like if I take cube root 32, so if you make the factors of 32, it, these are 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, but here is cube root, so 1, 2, 3, this 2 can be taken out, but cube root 4 will be inside that. So this number is not a rational, it is an irrational number. So a real number can be any, may be rational or irrational, these are. Now any real numbers, then
an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus an minus 2x minus 2 so on AO is known as a polynomial. So this is a polynomial. Okay, now you can see that this is an expression of a polynomial. So now we will take some examples ki whether this particular polynomial which is given to us is actually a polynomial or not in one variable, because in your syllabus you have to write polynomial in one variable only. So first example I am going to take, that is x7 plus 5x6 plus 3x4 plus 2x plus 3. So this is a polynomial. Why? Positive exponent. So n should be positive integer. Power can also be considered as exponent, so it has positive exponent, no negative, no fraction. Okay, positive exponent, and if the exponent is positive and second condition is it has one variable, and along with that these are real numbers, so it is a polynomial. Second example, if I take x raised to power 5 plus x raised to power 2 plus 1 by x. So, is it a polynomial or not? Check it properly. It is not a polynomial. You are absolutely right, because it is x raised to power minus 1. It has negative exponent. So, it is not a polynomial in case of one variable. So we have to see, we have to check, exponent should be positive, it cannot be negative. Now I will take third example, one more example. So it is x square plus 3 under root x plus 2. Is it a polynomial? So now you can see that x square and under root x means x raised to the power 1 by 2. You can say it is positive, but it is positive integer. It is not an integer. So again, it is not a polynomial. Okay. So by this way, you can easily say that either it is a polynomial and also it is not a polynomial. It is not a polynomial. It is a polynomial. It is a polynomial. Okay. So this is all about what is polynomial. Now we will discuss about terms and its coefficients. Terms and its coefficients. So what about the terms and its coefficients? So now we will firstly define ki how will we write this expression. So firstly I will take कि if fx gx hx, ठीक है, these are the polynomials, means we can express this particular expression in the form of a polynomial as fx gx or hx. So fx is equal to an xn plus an minus nx minus n plus an minus 2xn minus 2 so on plus a naught, and here we have x raised to power 0. Okay, now an xn comma an minus 1 xn minus 1 comma an minus 2 xn minus 2 and a0 are called terms. ये इस एक्सप्रेशन की टर्म्स है. तो टर्म्स की पहचान क्या होती है? विच आर सेपरेटेड बाय अ सिंबल प्लस और माइनस. व्हेन देयर इज अ सिंबल between the two terms, that becomes expression, and
this individual separated by a symbol is called a term. What about its coefficient? Now these are the terms. So an minus 1, an minus 2, a naught are called coefficients. Coefficients of anxn. An is the coefficient of anxn. An minus 1 x minus 1. An minus 1 is the coefficient of an minus 1 x minus 1. An minus 2 xn minus 2. An minus 2 is the coefficient of x raised to power n minus 2. And a is coefficient, but we call this as constant term. Why? Because its power is 0. So that is why a naught is called a constant term. Okay, constant माने which remains fixed, जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे आपके रूम की वॉल की हाइट. ठीक है, ये चेंज नहीं होती. एक पर्टिकुलर एज के बाद आपकी हाइट भी चेंज नहीं होती है, तो तब उस केस में उस क्वांटिटी को कांस्टेंट लेकर चला जाता है. नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल लाइक 3x square plus 5x minus 2. Now we have to write terms and coefficients. So terms are कौन कौन सी होंगी? 3x square, 5x and minus 2. And what about the coefficients? Coefficients 3 is the coefficient of किसका है? Yes, coefficient of x square. 5 is the coefficient of 5 is the coefficient of x, and minus 2 is called, yes, constant term. Okay, so this is about polynomial terms and its coefficients. Now we will take another term, that is degree of a polynomial. So what is the degree of a polynomial? The degree of a highest degree term. The degree of a highest degree term is called degree of a polynomial. Okay, now you can see here that n is the highest degree, or you can also write highest degree term, that is called highest exponent. You can use this word also, highest exponent. So n is the degree of this polynomial. 5 is the degree of this, पर ये polynomial नहीं है इसलिए इसकी डिग्री नहीं बताएंगे. 7 is the degree of the polynomial because it is the higher degree term. Higher degree term is x raised to power 7. 2 is the degree of this polynomial, but it is not a polynomial, so we will not write its degree. 2 is the degree of this polynomial. Higher degree term is 3x square. Okay, higher degree term, higher degree term. So wherever you will find higher degree term, तो डिग्री उसकी जो डिग्री होगी, हायर डिग्री टर्म इज दिस, तो उसकी डिग्री को हम कहेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, या हाईएस्ट एक्सपोनेंट को. तो आइए अब इसके भी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम कि कौन सा. नाउ I will take some examples like first one, x raised to power 5 plus 3x raised to power 4 plus 2x cube plus 5x square plus 7x plus 3. I have written all the terms in this case 5 4 3 2 1. पर जरूरी नहीं है आपके एक्सप्रेशन के अंदर सारी टर्म्स हों, लेकिन ये श्योर होगा
कि उसके पास हायर से लोअर की ओर ऑर्डर में डिग्रीज होंगी. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसे अरेंज करना है. लाइक अगर मैं लिखूं 3x² प्लस 2x प्लस 5x क्यूब, तो दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए? 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x. अब इसमें हमने कांस्टेंट नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम, इट इज ए पोलिनोमियल. क्योंकि पोलिनोमियल की कंडीशन है इसका जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. बाकी कोफिशिएंट्स रियल नंबर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 5. हायर डिग्री टर्म हमारी x रेज टू पावर 5 है, तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो 5 है, तो इसलिए हमारी जो डिग्री हो जाएगी वो 5 हो जाएगी. In this case x cube plus 5x square plus 3, so degree is 3. Okay, now you understood about the degree of a polynomial. Now we will define one more thing. Some actually we are not defining, we will write some standard names of a polynomial. Standard names of a polynomial, like number 1, constant polynomial. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग कर रहे हैं हम. कांस्टेंट पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called a constant polynomial. Constant polynomial like 1 by 2 minus 5 3, these are constant polynomial. कोई डिग्री क्या है इनकी? अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ लिख सकता हूँ x raised to power 0, and we know any number whose power 0 is 1, so that is why 3 is 3x raised to power 0, no problem. Okay, now second one is linear polynomial. Linear polynomial. So what is a linear polynomial? So a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. ओके, ध्यान से करना, ही आपको आगे भी काम आएगा. अगर हम इसके पहले 4 लेटर ले लें LINE, तो इट्स फॉर्म लाइन. इसका मतलब ज्योमेट्रिकली माने अगर आप ग्राफ बनाएंगे लीनियर पोलिनोमियल का, सो यू विल गेट अ लाइन. वहां आपको ये बात काम आएगी. A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial, like ax plus b. I will take its general expression. A is any real number, b is any real number, like 3x plus 5. Okay, so why? Because its degree is 1. Degree, now you know, highest exponent को देखना है आपको. Second one is third one is linear polynomial. Now quadratic polynomial. Quad means 2, so a polynomial of degree 2. Okay, like general form ax square plus bx plus c, 2x square plus 3x plus 1. This is a quadratic polynomial because its highest exponent is 2, its degree is 2. Fourth is cubic polynomial. Cubic polynomial is a polynomial of degree 3. A polynomial of degree 3, that is a cubic polynomial. 3x cube plus 5x square
प्लस 2x+7 क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जब आप बेसिक चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज वी नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री। तो इसलिए अब हम लिखते जा रहे हैं, क्यूबिक का मीनिंग जानना है बस। क्यूबिक माने 3, क्वाड्रेटिक मीन्स 2। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक polynomial. So biquadratic means bi means 2, quad means 2. So degree 4. A polynomial of degree 4. A polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial. Okay, now I will write one example. x4 plus 3x cube plus 5x square plus -1. Okay, now these are general examples. We can write degree 4 only. After that we can write any kind of term, either of degree 3, 2, x or 1, no problem. So this is about standard names of the polynomial. Now if we just concentrate on word polynomials, so poly means many and nomial means terms. So if we have to write a polynomial in form of terms, तो it means आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसके अंदर एक टर्म हो सकती है, उसके अंदर 2 टर्म्स हो सकती हैं, उसके अंदर 3 टर्म्स हो सकती हैं, सो ऑन। ठीक है, तो आइए टर्म्स के साथ ध्यान रखना है, टर्म के लिए नोमियल वर्ड जरूरी है। नोमियल, नोमियल माने टर्म्स। तो देखिए, अगर मान लो उस एक्सप्रेशन में वन टर्म होगी तो वन माने मोनो, मोनोमियल। नोमियल माने टर्म्स, मोनो माने वन, so combination becomes monomial. So then that monomial will be called as monomial. Like if I write 3, it is a monomial. If I write x raised to power 10, it is a monomial. X raised to power 35, it is a monomial. If a question is, write a question, if write a monomial, write a monomial of degree 35. So what you will write? X raised to power 35. No other terms will be there because monomial has only one term. If you have to write binomial, binomial माने two terms. Binomial कितनी terms हैं? Two terms हैं. तो if you have to write a binomial, write a binomial of degree 100. So you will write x raised to power 100 plus 5. आप कुछ भी लिख दिए, 2x raised to power 100 minus 7, x raised to power 100 plus 1 by 2, but degree should be 100 because we have to write degree 100, but it has two terms only because binomial means two terms. And if it has three terms, so students, three terms means trinomial. Okay, now you understood कितनी terms लिखेंगे? 3. ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने क्वाड्रेटिक लिखा था, यस क्वाड्रेटिक पोलोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है, लेकिन इसके पास कितनी टर्म्स हैं? 3, तो ये ट्राइनोमियल भी है। ओके, तो आप टर्म्स के बेस पर भी डिफाइन कर सकते हैं पोलोमियल को, और उसकी नेमिंग हम डिग्री के बेस पर भी कर सकते हैं। तो नेमिंग टर्म्स के बेस पर होगी तो आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, क्योंकि इसकी सेंस है पोली माने मैनी, अगर वन होगी तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इस तरह से आप
पोलोमियल ऑफ डिग्री 3 2 1 4 कुछ भी लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक चीज. अब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि पोलोमियल क्या होता है, उसकी टर्म्स और कोफिशिएंट्स क्या हैं, उसका डिग्री कैसे लिखी जा सकती है, और आप क्यूबिक लीनियर क्वाड्रेटिक पोलोमियल कैसे लिख सकते हैं, या फिर टर्म्स की फॉर्म में आप उस पोलोमियल को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. थैंक यू.